I'm sorry, I just आप लोग जानते हैं कि मैं इतनी टेक्निकली कभी हैंडीकैप नहीं रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग पूरा सुन्न है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा कोई समय आएगा कि हम लोगों को हमारे बहुत ही अजीज कलाकार, हमारे मित्र, हमारे भाई, उनको याद करना पड़ेगा। ये बहुत कठिन है, लेकिन हम सब ने बहुत ज्यादा उनके साथ बहुत गहरा रिश्ता रहा है, और बहुत सारे कलाकार हैं जो आज यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और उनको एक एक करके मैं आप लोग सब उनके इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। वी आर हियर टू ओनली एक्सप्रेस आवर लव फॉर द ग्रेट माइस्ट्रो, एंड I don't even want to say thank you to all these artists, because I think we are here because we are all connected. We are emotionally connected. We are connected musically. We are created. We are connected with the creative process, and only because he really meant a lot to all of us. He's been part of our family. He's been part of our musical family, and some of them have joined already. और मैंने रतन भैया से कहा था कि एक श्लोक गा के we'll pray for Subhankar ji's soul, and then we'll request the artists to all of them to speak one after the other. And I request most of them, whoever can stay back, because you never know if somebody wants to talk as a conversation, that's fine. जरूरी नहीं कि हम एक तरफा ही बात करें। तो रतन भैया, सबसे पहले आप श्लोक से शुरू करें। नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। प्रवीण जी, हमारे साथ माइस्ट्रो प्रवीण गुरखिंडी जी यहाँ पर है, and together we have been part of Panchtatva, where Praveen ji is also part, and Subhankar ji has also been a part of, and we've traveled across so many cities, and I know you are traveling just now, so I'll request you to speak before everybody else, because you requested that you want to be part of this, and you also have to take a flight. So please, Praveen ji, go ahead and speak. Namaskar. It's been a very difficult moment for me personally, because Subhankar da, he was like my elder brother, or the moments that I spent with him in on stage, off stage, will those memories will stay with me forever. As a musician, he was so understanding, and he was simply क्या कहते हैं कि वो जो मेन आर्टिस्ट की रूह है उसको समझ के वो साथ ही करते थे, और इतना हंसमुख उनका चेहरा था हमेशा। और कभी कभी बजाते वक्त हमारे ग्रीन रूम में वगैरह गलतियां हो जाती थी मेरे से, तो उसको भी वो मुस्कुरा के बोलते थे, नहीं नहीं कुछ कोई बात नहीं, आप करिए करिए। तो he encouraged me a lot, and first time when I was about to receive an award here, the organizer said कि आप शुभंकर दा से बात करके देखिएगा। मैंने कहा वो बहुत सीनियर है मुझसे, क्योंकि वो सारे लेजेंड्स के साथ रेगुलरली बजाते हैं, मेरे साथ शायद नहीं वो नहीं मानेंगे। तो आई जस्ट कॉल्ड हिम एंड आस्क्ड हिम, शुभंकर दा क्या आप आएंगे? तो बोले अरे जरूर, क्यों नहीं, आई हैव हर्ड यू प्ले, सो आई डेफिनेटली कम। एंड ही केम, एंड
that was my first solo concert with Subhankar Da, and even today I remember the way he and I had planned कुछ नया composition, कुछ नए ढंग का, कुछ नया स्टाइल का. मैं घबराया हुआ था, लेकिन उन्होंने इतनी प्यार से उसको सुना, फिर उन्होंने कहा कि चलो उसको ऐसा करते हैं, और आप जब ये बजाएंगे तो मैं ये बजाऊंगा. एंड सो अंडरस्टैंडिंग, सो एट हिज लेवल, जितना उनको एक्सपीरियंस था, जितना उन्होंने संगीत की सेवा उन्होंने की थी, it was it was a great gesture from him on that concert. And from then on काफी सारे जुगलबंदीज में हम लोग साथ में थे, और फिर हम लोगों ने बाहर भी ट्रैवल किया एक साथ, और काफी फेस्टिवल्स में साथ में बजाए. पूरी ऑल ओवर इंडिया वी ट्रैवल्ड. ही वाज अ फैंटास्टिक पर्सनालिटी. मतलब सिर्फ कला कला के बारे में ही नहीं, बल्कि उनका रहन सहन, बात करने का ढंग, और उनका लैंग्वेज. और जब भी फ़ोन पे वो बात करते थे, इवन व्हेन आई वाज डाउन विद कोविड दिस अप्रैल, ही कॉल्ड मी पर्सनली एंड ही स्पोक टू मी फॉर ऑलमोस्ट 20 minutes. एंड ही गेव मी सम टिप्स कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. एंड देन इवन वी डिस्कस कि ये अगर थोड़ा और चलता है तो आगे चलेगा कोविड, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए एज म्यूजिशियंस, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सर्ट्स वी शुड परफॉर्म, कितना हम लोग लाइव कर सकते हैं फेसबुक पे वगैरह वगैरह. सो ही वाज क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, वेरी हम्बल, डाउन टू, फैंटास्टिक म्यूजिशियन. और उनका जो तबला का टिम्बर था, वो मुझे बहुत पहले से, मतलब हरी जी के साथ जब मैंने उनका पहले लाइव सुना था हुबली में, तब से मैं उनका फैन था. कि उनका एकम्पनीमेंट करने का ढंग, और मेन आर्टिस्ट की सोच को ग्रास्प करने का जो उनकी काबिलियत थी, वो आई थिंक वाज सिंपली फैबुलस. ये जब इनफैक्ट आपको भी दुर्गा जी याद होगा, और काफ़ी सारे म्यूजिशियंस यहाँ पे हैं, तेजंदा हैं, शशांक जी हैं, ये लोग सब मेरे 100th एपिसोड में आए थे. शुभंकर वाज आल्सो सपोज टू जॉइन अस. उसी Yeah. मुझे उनका मैसेज आया था कि मैं आई एम डाउन विद कोविड, सो आई वोंट बी एबल टू जॉइन यू फॉर दैट एपिसोड. एंड आई नेवर थॉट कि उसके बाद हमारी कभी बात ही नहीं होगी. This is a huge and irreparable loss to Indian classical music. मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये हमने कभी मतलब नाइटमेयर भी नहीं सोचा था कि we will be talking about remembering Shubhankar Da in this manner. It is heartbreaking. It is truly, really unimaginable situation, and we are all pretty much heartbroken in a similar manner. So thank you, Praveen ji. Thank you for being with us today. And I don't want to say thank you. I think we are here for the same reasons. I think we should just express our love for this fantastic person. And we were lucky to have spent a lot of time with him in different ways, personally, musically, creatively, traveling, jokes, everything, lots of things. So, yeah. I would like to now bring in Maestro, the great sarod player par excellence, somebody who's really known Shubhankar Da in many different ways, probably more than us, because he's also, Shubhankar ji has always been a Calcutta boy, the fantastic Maestro, Pandit Tejendra Narayan Majumdar ji. Namaskar ji. Just one request, Tejanji, please speak in English. I can't relish otherwise. I Oh, cannot. sure. Okay, ji. Also in Hindi. First of all, as you know that I am really still can't believe that Shubhankar is not with us physically, because as you know that I just came back around 3:45 after all the rites, and as all the musicians, respected musicians, just now Praveen Bhai mentioned about him. It was really very tough to accept that Shubhankar Bhai, after
having spent so badly for the last 54 days with so much of pain and so much of, the most traumatic experiences. And I was very much into the whole process. And I know all the musicians here who have really helped and prayed for him. But unfortunately, we have tried, we couldn't. ये होता है, हम सोच रहे थे कि इतना जल्दी क्या था, और जिसके पास इतने कुछ देने का था, he has lot more to give, he was in the peak. And as he was very close to me, as all the musicians know that I started playing with him in 1989. First I heard him, and after that I think he had played the maximum concerts with Hariji, myself, and Rashid Bhai. So not only as like a brother, as a friend, we used to share a lot of things musically, on stage, off stage. He was such a fantastic human being, as Ravinji was telling. And he had a very special quality that with whom he used to accompany all the musicians, they used to feel like I have been performing with him since last 40 years. That capability he had. I think Shashank Bhai also will agree. We had a fantastic performance here. As you know that I do that Sar Samrat Festival in memory of my Guruji, Sar Samrat Ustad Aliwar Khan Sahab, where all the musicians have taken part. Ramkumar Bhai, Rakesh Bhai, Shashank Ji, and Praveen also. The last concert with Shashank and Praveen, what he had played, still people remember. And everybody, Durgaji, you won't believe today, everybody was crying, and the Facebook was totally flooded with the message of loss, not only musically loss, but as a human being. The way actually he used to believe the music, he used to believe the जो बोलते हैं ना कि साथ में क्या होना चाहिए, उठना बैठना एक बड़े आर्टिस्ट के साथ कैसा होना चाहिए. He had never ever misdealt with any of the musicians. Even he had inspired so many young musicians. मैंने देखा कि बहुत सारे young musicians, they have gone to Subhankar Bhai to learn, and he was fantastic in teaching them how the Bharat would be in the Bilambit Gatkari, in the Mantalai Gatkari, how the Laikari should be there. And even my son also I have sent to Subhankar Bhai. I don't know what to say. Everything just got stuck absolutely when we got the news just 2 days back. As you know that after COVID has gone away from him on 2nd of July. After he had been admitted to the last medical hospital, he was in ventilation with ECMO. And I have tried to pass on all the informations whoever have tried to know, even Shashank Bhai, and also every musician, including Zakir Bhai. Every day he used to write me what is the latest position, what is the latest situation, how it should be, this and that. Just 2 days back, when we were feeling that some betterment was going on, because he had a very bad lung infection, post-COVID lung infection with the consolidation. And also on 24th of July, I can still remember 24th of July was the Guru Purnima day. That day when
I got the news from the doctors and who had been there, including his wife, Sonia. She just called me and she was so much in, laugh that she was smiling and she was telling that Tejendra, today he was absolutely incensed and he talked so much. Though he couldn't speak. His sound couldn't come, as he had that cut here on that, which is called that tracheostomy. But he could make everybody understand that what exactly he wants to tell you. And finally, the last infection came. And from that time, we were really very much in tension and multi-organ failure and everything just finished. But what should I say? I still think that I have to think always that whenever I play with Subhankar, I didn't feel like that I have not played for a couple of months with him. He used to understand, he used to realize with whom he is playing exactly what I want, or what Shashank wants, or what Rakesh bhai wants, even with all the musicians, in vocal, in instrumental. So it's very difficult to get one tabla player who is equally best in vocal and instrumental. He used to be in so much in depth. So, I don't know what should I say about him. And I'm really not in position to say a lot because emotionally, today we had a very, very, with heavy heart, we had to do everything. So I just pray to God that wherever he is, he should be with a smile, and he should be making satisfied all the musicians, all the great musicians over there. That's it. Thank you. So much love and so much of bonding. We can imagine what a loss it must be for you, personally speaking, Yeah. because कई बार तो शब्द काफी नहीं होते हैं to express. It's very difficult, inexplicable. Yeah, but I'm sure your love is reaching out to him. I'd like to bring in Ramkumar Mishra ji here. Just Ramkumar ji, आप जरूर बोले शुभांकर दा के लिए. जय हो. मुझे सुन सकती हैं दुर्गा जी. ये बहुत ही दुखद समाचार कल मिला. ये जून से ही जब शुभंकर भर्ती थे हाल में और हमें पता लगा ऐसा है, तो हम लोग बहुत अचानक से फेसबुक वगैरह पर के लोग प्रे कर रहे हैं उनके लिए. बड़ा उसी वक्त एक शॉकिंग हुआ कि अरे क्या हुआ शुभंकर को. पता लगा कोविड है. ये फिर हुआ कि चलो इतने लोग को कोविड हुआ, सब हुआ तो ठीक हो जाएंगे. लेकिन जब ये हुआ कि नहीं, उनके लिए लोग प्रे कर रहे हैं तो थोड़ा क्या हुआ था. तो there is an echo. हाँ. अच्छा. My microphone, there is an echo. So suddenly, अब हाँ बेटर है. फिर क्या हुआ कि बीच में कुछ न्यूज ऐसा आना बंद हुआ. मैं बल्कि तेजेंद्र भाई बैठे हैं, प्रणाम करता हूं उनको. मैं बल्कि सोचा था तेजेंद्र भाई से नंबर, मैंने खोजा तो मेरे पास सबके नंबर थे, विजय के थे और विक्रम के थे, सबके. शुभंकर का नंबर नहीं था, तो मैंने कहा मैं तेजेंद्र से नंबर लूंगा और बात करूंगा. तो मेरे बेटे, हाँ, यस. सो आई वाज सपोज टू आस्क तेजेंद्र, लेकिन मैंने कहा तब तक न्यूज नहीं आई. तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा लगता है सब ठीक है सिंस लास्ट 20 days. तो अभी मैं एक्चुअली बेंगलोर में हूँ यहाँ पे, और कल एक ऐसा ये शॉकिंग न्यूज, अरे मैंने मतलब इतना शॉकिंग कि नॉट बिलीवेबल. क्योंकि शुभंकर एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व, बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग और बहुत ही अच्छे तबला प्लेयर, बहुत ही सुलझा हुआ तबला प्लेयर, और मेरे लिए बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा. और हम लोग का लगभग दोस्ती 32 साल पुरानी, 89 से हम लोग कलकत्ते में दुर्गा पूजा में सबर्बन जो एरियाज हैं, जो शांतिपुर है, बैरकपुर है, दुर्गापुर,
यहाँ हम लोग जा जाके बहुत साथ में प्रोग्राम करते थे। कभी आर्टिस्ट फिक्स नहीं है, अब रोनू मजुमदार हैं, तरुण भट्टाचार्य जी हैं, सब लोग हैं, आलोक दास गुप्ता सितार, तो ये लोग सब लोग कोई किसी के साथ बजा ले रहा है, देवाशीष भट्टाचार्य जी गिटार, कोई किसी के साथ बजा रहा है। वो एक ऐसा मजा हम लोग साथ में करते थे, वो सारी बातें याद आ रही है। स्टेज शेयर कितनी दफा ऐसा होता था कि चलो 2 आर्टिस्ट बजा रहे हैं, 2 तबला बैठा, कितने कितने प्रोग्राम हम लोगों ने साथ में भी स्टेज पे बजाए हैं, साथ किए हैं। तो कल का ऐसा था कि मतलब कल रात भर मैं सो नहीं सका, मैं करीब 2:30 बजे सोया, फिर मैं करीब 5:30 बजे सबसे उठ के मैं जगा हूँ। दिमाग में वही चल रहा है कि एक बहुत अच्छा तबला प्लेयर, सुलझा हुआ तबला प्लेयर, और होता है ना कि मेरे फेवरेट तबला प्लेयर में से एक हमारे बीच नहीं है, ये अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। और एक जैसा कि दुर्गा जी ने भी कहा कि हम लोग कितने दफा हम लोग उन्हीं के प्रोग्राम्स में, जलसा हो चाहे पंचतत्व हो, कितनी दफा हम लोग साथ में रहे हैं। और एक ऐसी एक भाईचारा, एक ऐसी दोस्ती थी। एक दफा पंचतत्व के प्रोग्राम में बापू जी और पंडित जी हरि जी के साथ, और विश्वमोहन जी तो है, तो उसमें बापू जी नहीं थे, जयपुर का था कुछ ऐसा, तो उसमें राशिद भाई आए थे। तो मुझे आकर बोलते हैं शुभंकर भाई कि रामकुमार भाई ऐसा है, आप 2-2 बजा रहे इंस्ट्रूमेंट, हरि जी भी आपको लिए हैं इसमें, मैं राशिद भाई के साथ हूँ, आप विश्वमोहन जी बजाएंगे, अच्छा मैं ऐसा करूँ कि मैं कुछ एक पार्ट उसका बजा लूं क्या, इंस्ट्रूमेंटल। मैंने कहा क्या बजाना है यार, बताओ, हम लोग बिल्कुल। बोले आप भट्ट साहब तो पूरा आप बजाइए, हरि जी का भी आप फर्स्ट पार्ट बजाइए क्लासिकल, उसके बाद उनका जब धुन और झालक आएगा तो मैं बजा लूं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलेगा। इनफैक्ट हरि जी चौंक गए, मैं उनके बगल में बैठा हुआ था जलसा के प्रोग्राम, वो पंचतत्व में, वो घबरा गए कि तबले की आवाज, उनको हमने नहीं बताया ये बात कि हम लोगों ने आपस में ये तय कर लिया है। तो देखने लगे तबले की आवाज कहाँ से, दूर से कैसे आने लगी। तो फिर बाद में हमने उनको कहा कि नहीं बाबूजी ऐसा है कि हम लोगों ने, बोला अच्छा अच्छा मुझे बताया नहीं आपने। कहा हाँ नहीं बता पाया आपको, हम लोगों ने तय किया ऐसा। तो एक इस तरह की दोस्ती और इस तरह का मतलब एक खुला खुला मन का, देखिए एक अच्छा आर्टिस्ट वही होता है जो कि उसका मन और विचार भी खुला हुआ हो और अच्छे मन का हो, तभी उसका गाना बजाना भी वैसा ही होता है। और जैसा हमारे तेजन भाई ने भी कहा कि जो कि जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि तबला जो है एकम्प्लीमेंट की चीज है, सोलो बजता है इसमें जरूर, एकम्प्लीमेंट उसकी बात जहां आती है तो शुभंकर भाई का भी जवाब नहीं। इतना जिस किसके साथ बजा रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ बजा रहे हैं, जिस वोकलिस्ट के साथ बजा रहे हैं, बिल्कुल उसके साथ एकदम एक, जिसको बोलते हैं हमारे भट्ट साहब बोलते हैं लॉकिंग, वो हो जाती थी। और बस क्या ज्यादा क्या बोलना, बस हमने एक बहुत अच्छा तबला प्लेयर खो दिया, जिसको कि अभी युवाओं को बहुत जरूरत थी ऐसे तबला प्लेयर को सुनने की और उनसे सीखने की, बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये बहुत बड़ा लॉस हमारे क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में तो हुआ ही है, साथ में मैं ये कहूंगा यंगस्टर्स का भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है कि उनको बहुत क्योंकि देखिए क्या है कि करते 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 एक समय आता है, एक स्टेज आता है ऐसा कि हम अपने एक्सपीरियंसेस कैसे क्या करना है, कैसे वो लोगों को सिखाते हैं। कायदा और गत फरक तो ये तो सीख लेते हैं, वो तो 4 दिन में बच्चे रियाज कर लेते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है वो सिखाना बहुत बड़ी बात होती है। शुभंकर भाई भी उस स्टेज पे थे कि वो लोगों को अब बताते हैं कि देखो ऐसे बजाओ, ऐसे करो, ऐसा। तो वो जो इतने समय का अनुभव है वो लोगों के बीच नहीं आ पाया और वो चले गए। अभी भी विश्वास नहीं कि शुभंकर हमारे बीच नहीं है। बहुत ही ये बहुत बहुत ही ज्यादा दुखद बात है और एक बहुत अच्छे तबला प्लेयर को हमने खो दिया है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा वो जहां भी रहे, ईश्वर उनको बिल्कुल अपने पास अपने चरणों में जगह दे, और हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे उनके तबले के द्वारा। उनके कुछ धिनगिन करेले में प्रैक्टिकली भी टेक्निकल भी बता दूं, धिनगिन वगैरह धीरे धीरे का जवाब नहीं, बहुत हमें याद आएंगे। और हमारे मन से कभी शुभंकर बाहर जा नहीं सकते, जब तक हम हैं वो भी है हमारे साथ, हमारे दिमाग में उनका तबला कान में है, और ईश्वर उनको सदगति दे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। जय हो। Unmute, please. We can't hear you. Durga. हाँ, Yeah. मैंने कहा कि जय हो राम कुमार जी, आपने उनको इतना प्यार से याद किया और उनकी जो तबले की भी कुछ कुछ खूबियां आपने शेयर की, और पंचतत्व में पीछे पीछे ऐसी सारी बातें होती थी जो मुझे भी नहीं पता चली, आप लोग आपस में बातचीत करके अपना अच्छे करते थे। मुझे लगता है कि पंडित शुभंकर बैनर्जी को एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने में, और उनको पूरे मतलब विश्व में भ्रमण करने के लिए एक कलाकार ने जिन्होंने उनका हाथ पकड़ा और बहुत कम उम्र में उनका हाथ पकड़ा और पूरे
जगत में उनको लेके घूमे, वो है हमारे आदरणीय पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। और मुझे याद है कि उन्होंने मुझे सबसे पहले, जब मैंने उनका नाम सुना था शुभांकर दा का, तो मैंने पंडित जी के ही मुंह से सुना था, और उन्होंने मुझे कहा था तुम इसको सुनना। और तब मैं कुछ ऐसा कुछ खास क्लासिकल को लेके कुछ काम नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ ऐसी प्रोग्राम सुनती थी, और बहुत मुझे ऐसा सब लोगों की जस्ट कॉन्सर्ट जाके सुनती थी, पूरे बापूजी के साथ घूमती रहती थी, और उन सब जगह सबके जाके प्रोग्राम सुनती थी। तब उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि तुम शुभांकर को सुनना, बहुत अच्छा बजाते और एक दिन इतना नाम होने वाला है। तो ये बात मेरे दिमाग में ऐसी छपी हुई है कि इतने बड़े कलाकार ने इतने प्यार से और इतने यंग आर्टिस्ट को इतना पैशनेटली मुझे बता रहे थे। मैं ये आज भी नहीं समझ पाती हूँ कि मुझे क्यों बताया, लेकिन उन्होंने मुझे जरूर बताया। और इसके लिए आज पंडित जी खैर अपने स्कूल में हैं और बिजी हैं। तो राकेश, आई एम श्योर यू हैव सो मेनी इंसिडेंसेस, और इतना सब कुछ है आपके पास शुभांकर के साथ, पर्सनली, प्रोफेशनली, म्यूजिकली। एक बहुत अहम एक रिश्ता रहा है पूरे आपके साथ भी और बाबूजी के साथ भी। प्लीज, आई एम श्योर ही मस्ट बी वेटिंग टू हियर योर लव फॉर हिम। नमस्कार सभी लोग को मेरा प्रणाम। मैं आई एम नॉट गोइंग टू टॉक एनीथिंग अबाउट तबला ऑफ शुभंकर दा। ये सब कायदे कानून ठीक है, बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, बट माय रिलेशन विथ हिम व्हेन आई it goes long back, 25 years, when he was performing for the first time with Babuji in ISKCON. I still remember, and when I saw him, I was like, "Baap re, who's this bodybuilder and a tabla player? What exactly he is?" And I got, because I was also in sports and everything, and he came and shook hand with me and everything, and I started playing. And when I heard him, I don't know much about tabla, but it was very different. After, when there was a regular of Madan Mishra ji and Kashinath Mishra ji playing with Babuji at that time. So when he played, I thought, wow, this is something different. So technically I couldn't make up. But the contribution of Subhankar Da for me was teaching me music. Because he had played so much with Babuji. Unki ek bandishein, the new ragas what he had created, and sometime he had created on stage spontaneously. तो वो मुझे बताना कि नहीं, इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, बाबूजी का सुर ऐसा लगता है, वैसा लगता है, ऐसा जाता है. So he has taught me a lot of things. We have been traveled all over the world together with Babuji, and we together, and we stayed also, we shared the room. Every morning jogging, मुझे dips मरवा रहे हैं, नमस्कार ऐसे मारते हैं, arms ऐसा है. So I cannot forget everything. Everything is there in the mind. But amazing guy. I can say that he is one musician, one very clean soul artist, who's not worried about who's playing where, with whom, how much he's taking, kya ho raha, and no politics at all. Otherwise, generally 99% every musician is a Wikipedia of other musicians. They know what is happening where and who's doing and why they're doing. But he was never into it. Sharing the room means he was a foodie person and a shopping, I can say shopping maniac. Chalo shopping karte hain. And whenever he wanted to buy anything, tum pe chhod diya. If you tell me, I'll buy it. Otherwise, I remember even I bought a tuxedo for his marriage in Hong Kong. We were traveling together. I used to call him Laughing Buddha. Always a smiling face. No wonder how big the tension was. Visa issue, ticket issue, concert issue. It's raining. The concert is going to happen or not, but stress-free musician, and always keep everybody calm. But I cannot still believe this has happened. I wanted to go today, but the family stopped me because I have not taken my second dose and say it's not safe traveling and all. But I was there on the Facebook watching all the rituals. But Babuji used to love him a lot, and he used to say he is a pure and a real tabla player. No gimmick, nothing. What I used to hear from him,
and you should play with him. I used to call him कभी कभी, he used to play. मैं उनको हमेशा कहता था आप फिर आपने उर्दू बजाया, बिकॉज इतना आड़ा टेढ़ा बजाते थे कि हम लोग अपनी लय भूल जाते। सच्ची में बताऊं तो बहुत हंसते थे और मुझे स्टेज पे इशारा करते थे, आज उर्दू नहीं बजाया मैंने। So all this memories, it's amazing, and कैसे हो गया such a pure and good soul. I think अच्छे लोग की भगवान को भी सही जरूरत होता होती है। है, उनको भी जरूरत है अच्छे लोग की। And I'm sure wherever he is, he'll keep everybody happy with a smiling face, and he's still my laughing Buddha. So sweet, Rakesh. Very, very sweet. And Exactly tell what me, I tell me first of all, why you gave me I got the Zoom ID very late. I know I'm not one of your नहीं, favorite. टेक्निकल हो रहा था, टेक्निकल हो रहा, ग्लिच हो रहा I था। understand. I understand. I understand. I'm sorry about that. And no, you don't have to be sorry. We all are sorry today. It's fine. No problem. Yeah. Um, but truly so sweet. You called him Laughing Buddha. It's a most appropriate name for him. हमेशा smiling, ever smiling, no tension. ये बिल्कुल बात सच है। और very nice, बहुत प्यार से, कमाल। कभी ना उनका कभी रहने से कोई टेंशन ही नहीं होता था। नहीं। उसे लगता था कि हमारे टीम मेंबर है। मतलब कभी होता है ना कि कलाकार को हम क्या बताएं और क्या ना बताएं, कभी कुछ प्रॉब्लम पीछे चल रही होती है, कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि शुभांकर दा को नहीं बता सकते। इनफैक्ट ही वुड बी लाइक us, you know. It was amazing quality, और म्यूजिक भी इतना एफर्टलेसली वो सारा परफॉर्मेंस हो जाता था कि पता भी नहीं चलता था कि है ये वही आदमी जो हमारे साथ भी पीछे कुछ डिस्कस कर रहे थे बैक स्टेज में, जो हम लोग टेंशन में चल रहे थे, कुछ हो रहा था, और स्टेज पे वही कुछ, absolutely stunning and most spectacular performance, truly. In fact, I've heard Zakir Bhai telling that when we were traveling and we were listening in the car, this solo or something, and he was appreciating the way this young man has utilized his long fingers, and the fourth fingers is amazing. It's something different. मुझे तो कुछ technical पता नहीं चलता, but him appreciating it's the big thing. His three fingers, especially. Yeah. This, and especially these two fingers. Two, yeah. Amazing. Today I was with Bikram and Tanmay and some other tabla players. Everybody was discussing about this, how he could get that much of power in these two fingers. Yeah, especially it used to look like a hammerhead, very unlike of other. I'm not sure. And I was there with him in his every project. He used to tell me, my project is not complete with, sorry, I'm muted. Sacred drums. Sacred drums, and then the tabla tail. I used to call him, yeah. Dada, you are the head of the tail. Means you are the head. No, you are the melody player and you have to take, remember, you are the head of the tail. Tabla tail, when he came with that. And then we did one more album. He used to call me, and not staying in the hotel, I used to stay at home. And then in the night, we used to go पूरा जितने भी मिस्टी दुकान है, गंगूराम से लेके फिर केसी दास, सब जगह मुझे एवरीथिंग, मतलब कैलकाटा दर्शन होता था. Then his favorite place, our favorite place, Chinatown. He used to love Chinese. Chinatown, yes. Yes, so many memories and so many memories. Yeah. And there's another musician here who is absolutely a fantastic maestro of sitar, somebody who's who's a brother to Subhankar, and somebody who shared precious part of his life, both musically and personally, is Purbayan Chatterjee. I'd like to bring him on now. Hello Durga ji, namaskar everybody. And it's unfortunate that we are getting together for this occasion, but it is certainly nice to know that we are all united in our grief. And I think today has been a very emotionally draining day for all of us. So it was nice to see Rakesh bhai recount some nice, pleasant. I think when a person passes on, whatever the circumstances, once he's gone, it's our duty to celebrate his life. And I think that is what we are here to do. And
I will quote. I found a very, very wonderful quote today. I mean, there was this legendary drummer called Charlie Watts who also passed away yesterday. And there's something that Antonio Sanchez said about him, and he said that Charlie, if you have received so much love in death, then you must have done well in your life. So I think if we take away anything from today or from the past 2 months, it is the fact that that there was so much outpouring of love. There was so many people from across the world praying for Subhankar Da, and it just goes to show that that his music and himself touched so many lives. और देखिए हम लोग, I was thinking about it. I got a little philosophical today, and I was thinking, we are just a blip in the radar. We are here for a few years, and there's so much great music which has happened before us, and there's going to be so much great music in the future going forward. So we just मतलब एक कुछ चंद लम्हे के लिए हम लोग इधर हैं. पर if we can touch people's lives with our actions, our music, then that chand jitne bhi lamhe hai can become eternity. So I think Subhankar Da is, I don't think I'm even qualified to talk about his music. So many greats have given him so much love, so much appreciation. But I would like to say one thing which I would personally like to highlight is I think his musicality also stemmed from the fact that he could understand every little nuance of vocal music. He was such a fabulous singer. और आज हम लोग उनका जो एक वोकल एल्बम उन्होंने बनाया था, उसमें मुझे भी बजाने का मौका मिला था. We were listening to a couple of those songs, और क्या खूबसूरती से वो गाते थे. उसी से मतलब साफ जाहिर होता है कि वो जब बजाते थे हम लोगों के साथ, तो ऐसा है कि उनका मतलब दिल गाता था हमारे साथ. And this is the only thing I would like to highlight. I think it's a great sense of personal loss for all of us here who are seated here. I am personally thankful that in the last 2 months, this entire group, we've been all in touch with each other, everybody trying to do their bit. But again, I just want to highlight the fact that this man got so much love and has taken so much love. He's left us early. But some people, I mean, there was one person I was thinking of today. It was Sharma. I mean, he left us so early. And yet, I think he got more love for a few lifetimes than many people can get in one lifetime. So Subhankar Da, and just with his music, as Rakesh bhai said, उनको किसी के कुछ काम में पढ़ना नहीं था, उनको सिर्फ अपना संगीत के लिए जो उनका जो dedication था. He was a pretty spiritual person also. I've seen him read a lot of spiritual literature, and it's rare that you come across, and we tend to eulogize people after they go, but this is one person who really deserves the more you say about him, it's still not enough, because he, as a human being, I'm talking about, as an artist, I'm not even qualified. He was one of the best ever, but just as a human being, he has touched so many hearts. So I'm sorry that I've made this a bit philosophical and emotional, but I would love to celebrate his life more and more. And I would pick up on what Rakesh bhai said, all the fun, all the laughter, all the wonderful moments. I think that is what I would like to remember him by. Thank you for having me here, and let us all, remember this great artist, this great human being. In fact, I used to ask Sonia Bhabhi that Subhankar Da को देख के लगता नहीं कि sometimes he gets angry or not. अरे नहीं, इतना मीठा खाता है, कहाँ से गुस्सा आएगा. मैं तो रुकती हूँ कि कभी झगड़ा हो, sometimes he gets angry and then उसको पटाओ. मतलब नहीं, मैं बोला तो गर्लफ्रेंड भी नहीं होगी. कहाँ? You stay more than me. You stay with him. You know better. And Rakesh bhai mentioned that he was a foodie, and when he was here in Bangalore, we made it a point to, I used to take him, suggest different hotels to try different cuisines. And I think Durga ji also must be remembering, Yes. invited all of you here home. So
In fact, when I was down with COVID, when he spoke to me, he said, "Get well soon. I want to come and have masala dosa in your house." Sarika has prepared. He had prepared such wonderful dosa, so I want to eat it. So he really was a very very sweet person, and we'll miss him. We'll surely. Very much. Very much. Parvinji, you have changed your mustache style? ये कोविड में करने के लिए कुछ काम नहीं था ना, तो मैंने कहा तो मुस्ताच ही बढ़ा Oh, लॉकडाउन के साइड इफेक्ट. Oh. Looks like a Veerappan. But Purbayan, Yes, very well Bachchan. said. I mean, you spoke about so many different aspects about he being philosophical, which reminds me about he addressing the press conference for Panchatattva in Patna, and all the musicians were there, and and I remember. Though I have conceived that project, I speak about it differently. What he spoke that day was so spiritual and so divine. And I've never forgotten the way he expressed about all the 5 elements of nature and how he spoke about that, in connection with music. It was very deep. It was in depth. And I kept looking at him. I said, this man just hardly speaks anything. And when given a mic, first he said, nahi, nahi. He was sitting next to Bapuji. He said, nahi, nahi, nahi. I said, nahi, all the artists are speaking, aapko baat karni hai. So then when he took the mic, he just spoke for 2 minutes. Magar unka jo ethos tha, the philosophy, the spirituality was so to the point and so in depth. It really touched my chord, and it elevated even the thought process about the whole project. I've never forgotten that, actually. I'd like to bring in my Guru Bhai and, of course, the fantastic flute maestro, Shashank Subramaniam. I don't know what to say. I mean, all of you have said such wonderful things. Every bit of it resonates with the experience that I had with Subhankar Da. The more I think about him, the more I realize how much I had the great, wonderful opportunities to be with him and play with him. It's unbelievable. Today I was looking at my photo albums, and I mean, literally I could fish out hundreds of pictures of such beautiful moments with him. I was so fortunate to be touched by him, as Purbayan put it rightly. He was truly a blessed individual. Back in the 90s, I first performed with him in 1998, I think. And since then, we were part of many interesting concerts, be it Jugalbandis, be it fusion, be it my solos. Often when it came to my solo concerts in north of India, I would really request him to come and play, and even when there was not a mridangam player on that in that particular concert, I would be so much at ease playing with him, and such was his mastery. It was unbelievable. Every moment with him was still etched in my memories. As Purbayan ji or Rakesh bhai, so many of you have already mentioned, I was fortunate also to be in his company in all these tours, and one thing I always observed in him was he was a very sincere artist. Yeah. No matter what, he gave his best. There was never a moment of deja vu in his approach. He would always silently do that killer of a job and leave. That was one striking aspect of his personality. He would never try to impress upon somebody intentionally. That is something I always saw in him. And as all of them have stolen my words today, but I never had a moment where I caught him on a wrong note, or he caught me on one. And he was one person I saw, even when he played with people much younger to him,
He would be that very silent guide, silent supporter on the stage. He would never show his supremacy, though he was a supreme artist, but he would always nudge the artist and inspire them to do so well. I mean, it was unbelievable, and in a very quiet manner. You would never feel intimidated with his presence, and you would always say, "Okay, here I have a shot in the arm," like a thing with him around on the stage. The one thing that we greatly exchanged often in phone calls or meetings would be we would immediately take a look at our cars or our watches. That was one common passion that we really had, and I got him a very nice Omega watch from Chennai, and I sent it across to him. And we would often speak about his next plans of getting a nice Rolex. And in fact, as late as about 4 to 5 months ago, we were talking about that, and I would send some pictures from Chennai. But unfortunately, God had other plans, so unfortunately for him. But anyways, I would like to really leave it here. That I'm so grateful, that I was his friend and his artistic collaborator, and I learned so much from him as an artist, as a fellow artist, and as a human being. And I'm sure we would remember him forever for everything, not just his music, also for his very pleasant personality. That is often not a compliment. A very good musician and a fantastic personality. Very few individuals who have that rare combination, without airs of being who they are, and especially without having any issues about who they are, very confident on who they are, and not being there to impress upon anyone. So this is one unique artist for sure, and I would truly miss him. And no visit to Calcutta or vice versa when he came to Chennai was complete without our phone calls or meetings. So I will truly miss this great individual. Well, this teaches everyone us that we can buy a watch but not time. Yeah, true. Yes. And in fact, as Purbayan rightly put it, the first thing that came to my mind was Mandolin Srinivas as well. Because I'm now as old as when Mandolin Srinivas was around when he passed away. So every day it kind of brings something special about these people, and the very sad way they had to part, this world so suddenly, and to the shock of millions. This is such an unfortunate situation, but I don't know how to really take this, but I think we have to kind of move on and celebrate his life, as Purbayan said. He has left enough out there. Yeah. Before, thank you, Shashank. And well, I wasn't aware that all of you have such expensive tastes in watches and everything, but it's a nice anecdote. Before we take on, I call Pandit Vishwamohan Bhattji, who's here right now. I'd like to call the fantastic tabla maestro with whom Subhankar has played duets with, and especially I'll never forget the experience of bringing on both of them to play a duet at Idea Jalsa concert in Ahmedabad. And it was like a storm what they did. And I remember Bapuji especially was sitting right on the stage. There were about more than 7,000 people there in the audience, and Bapuji was so happy with the way they constructed the duet performance. और मुझे continuously बोलते गए, इसको बोलते हैं duet, इसको बोलते हैं duet. देखो दोनों सोच विचार करके एक दूसरे की बढ़त कर रहे हैं. इस तरह का duet होता है. इसको कहते हैं जुगलबंदी, ना कि कोई competition हो रहा है. And that, of course, is the fabulous maestro Yogesh Samsi. Please, I'm sure you have lots to say. Namaskar to all of you.
मेरे भाइयों को। You're a little low, Yogesh. Volume is very low. Volume is low. Is it better now? No. Yeah. Little better. Little better. Well, as everyone has said, everyone feels it and experiences it. सबको यही महसूस हो रहा है कि Very low, Yogesh. You're very, very low. okay, let me just Can you please take the earphone? just give me 2 seconds. So should I go to Yeah. Panditji? Okay. Yeah. So as here Pandit Vishmohan Bhattji is here, and I'm sure साथ में बहुत ट्रैवल किया है, और मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि कुछ कहें शुभांकर बैनर्जी। मैं क्या बताऊं, इतना स्तब्ध रह गया हूं मैं। मतलब इससे बुरा दिन शास्त्रीय संगीत के लिए क्या होगा कि इतनी यंग एज में हमने एक ऐसा वंडरफुल आर्टिस्ट खो दिया है। और जैसा कि शशांक भाई सभी ने कहा कि कमाल की पर्सनैलिटी वो थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं थे बोलने में भी मुझे इतना बुरा लग रहा है, और मुझे ये मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि ये दिन होना ही नहीं चाहिए था कि हम लोग सब एक कंडोलेंस मीटिंग के लिए मिले, और वो भी शुभंकर जी के लिए। मतलब एक व्हाट आई वुड लाइक टू ओनली से दैट इट्स ए वेरी ग्रेट लॉस टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। हम लोग जैसा आपने दुर्गा जी कहा कि बहुत ट्रेवल की, बहुत प्रोग्राम बजाए, और ज्यादातर प्रोग्राम आपके इसके लिए बजाए हमने। जलसा जो आपका होता है, आइडिया जलसा का जो प्रोग्राम होता है उसके लिए बजाया हमने, पंच तत्व के लिए बजाया साथ में। और क्या अंडरस्टैंडिंग, और क्या मतलब पर्सनैलिटी वो इसमें कभी उन्होंने मुझसे कभी एक कंप्लेंट नहीं की पूरी जिंदगी में कि भाई ये ऐसा हो रहा है या ऐसा कर दीजिए। कभी नेवर ही स्पोक नथिंग, नो कंप्लेंट्स ऐसा। एंड और देखिए संगत में तो अब सारे यहाँ पे तबला प्लेयर बड़े बड़े मौजूद हैं, वो सब जानते ही हैं कि तबला संगत में उनकी महारत हासिल थी, इसमें कोई शक नहीं। उनका टोन, और मुझे सबसे अच्छी बात लगती थी कि तबले का जो ट्यूनिंग होता था इतना एक्यूरेट होता था। बस दो हथौड़ी इधर दो उधर, बस हो गया एकदम एक्यूरेट। मतलब हमको क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो होते हैं उनको तानपुरा तो सुनाई देता ही है, लेकिन चूंकि जो ठेका होता है वो लगातार नादिन दिन्ना नादिन दिन्ना नादिन दिन्ना नादिन दिन्ना, तो उसमें एक लॉ बनती है। वो लॉ जो होती है वो सा एस्टेब्लिश होता है उसमें। तो अगर तानपुरा थोड़ा फेड आउट भी हो जाता है तो भी वो तबले के टोन से वो सा मिल जाता है हमको। और वो खूबी शुभंकर दा में थी कि उनके जो नादी निन्ना आता था, और उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आती थी, कोई जोर नहीं आता था, कोई स्ट्रेन नहीं होता था। इतना रियाज, इतनी मालूमात, इतना ज्ञान, इतना मुश्किल तबला मैंने शायद ही किसी का सुना हो। ये मैं इतना नहीं समझता हूँ तबले में, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि उनका तबला बहुत बहुत ऊंचे स्तर का था, विद्वत्ता का तबला था। और उसको समझने के लिए बहुत कुछ उसके ज्ञान की आवश्यकता होती थी। उनकी मालूमात, उनका ज्ञान, उनका सबक, उनका अदायगी, और उनकी जो क्लैरिटी होती थी, जो हर बोल में हर तरह के किसकी कुछ भी बजा दें, चाहे कुछ भी रेला भी बजा दें, कुछ उसमें इतनी सफाई, क्लैरिटी, और वो उसकी जो फिनिशिंग होती थी, मतलब सोच नहीं सकता आदमी कि कहाँ दिमाग जा सकता है, क्या कैलकुलेशन है, क्या लयकारी है। जितनी तारीफ करें उतनी ही कम पड़ेगी दुर्गा जी। और सभी लोग जानते ही हैं इस बात को कि क्या इतने बड़े कलाकार के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं। मैं बहुत ही पर्सनल लेवल पर बहुत डिप्रेशन में चला गया हूँ मैं। राजन मिश्रा जी के बाद में फिर अब ये इनके जाने से एक वैक्यूम आ गया हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में। और बहुत ही मैं उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको शांति प्रदान करे, अच्छा स्थान दे। और हम लोग उनको और उनकी शख्सियत को, उनके तबले को
हमेशा याद रखेंगे। इस भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में उनका नाम अमर है, अमर रहेगा, और विश्वास नहीं हो रहा है। धन्यवाद। अनम्यूट अनम्यूट करना। सॉरी, मैंने कहा आपने बहुत प्यारी बातें कही उनके बारे में, और उनको उनके तबले के बारे में भी आपने जो बात कही कि उनका तबला अमर रहेगा। मुझे कभी कभी इतना खूबसूरत और कितनी बढ़िया चीजें उनसे होती थी, और आज ऐसा लग रहा है कि आई होप द ऑडियंस रियलाइजेस कि कितना बड़ा ट्रेजर उनके साथ कुछ उनके शागिर्दों को सिखा के तो गई हैं, और हमारे पास डिजिटल माध्यम से हमारे पास जितना वो हम रिकॉर्ड कर सकते थे रह गया है, लेकिन ना जाने कितना सारा वो ट्रेजर अपने साथ ले गए हैं, और ये बहुत बड़ा एक वैक्यूम जरूर फील होगा म्यूजिकली। एंड नाउ आई एम श्योर योगेश यू आर Yeah, is my voice okay now? परफेक्ट। Yeah. या तो प्लीज Honestly, I'm at a loss of words. So much has been said about Subhankar Da. After knowing him for decades on end, in so many music festivals, we met in Mumbai, we met in Calcutta, and so many other cities. Traveled together. We've known each other so well, so closely, but जो मेरा रिश्ता उनके साथ घनिष्ठ, सबसे ज़्यादा घनिष्ठ हुआ वो जब मैंने उनके साथ, जैसे आपने कहा, ड्यूएट हम लोगों ने जब बजाना शुरू किया, तो उनका जो सहज भाव है, इतना सहज भाव मुझे कभी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बैठते ही एक जैसे बैठ के सहज भाव से चर्चा होती है, वैसे उनके साथ स्टेज पर तबले की चर्चा हो रही थी, इतने सहज भाव से और इतने इत्मीनान, उस मुन में इतना इत्मीनान, इतना हंसमुख चेहरा तो सब लोगों ने देखा ही है। सो द डीपर कनेक्ट, द इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दैट हैपेंड विद शुभंकर दा when we played together was something that I will never forget. It will be treasured by me. There was so much that we exchanged. There was so much that we spoke about on an intellectual level on the subject. Incredible storehouse of knowledge, I must say. There was so much that I discovered playing with him. Sheer Vishu Bhai just said that he was a knowledgeable tabla player. That's absolutely an understatement. The amount that he probably has composed himself also was a revelation to me. I'm truly fortunate that I had such fantastic moments. इतने खूबसूरत पल शुभंकर दा के साथ मैंने बिताए, कलकत्ते में, उनके घर पे, मेरे घर पे बम्बई में। अनेक बार बैठ के गुण चर्चा हुई है, हंसी मजाक हुई है, आनंद लिया है, सत्संग हुआ है। मुझे सचमुच बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है कि मैं दोबारा उनके साथ इस गुण चर्चा में शामिल नहीं हो पाऊँगा। लेकिन जैसे पुरबायन ने कहा कि God had other plans. I think we should all get together and celebrate the achievement what he achieved, in spite of leaving us early in such a short period of time, to have achieved such a high level of proficiency, excellence, and depth in this subject, and to have passed it on to the next generation. I've heard some of his disciples, they are fabulous tabla players in the making, and I think this contribution to have come across in such a short period of time, absolutely unbelievable. So let's celebrate Subhankar Da's life. Let's pray, of course, to God Almighty to give him
a fantastic place in his charan. उनके चरणों में उनको जन्नत नसीब हो, और प्रार्थना है उनके परिवार के लिए कि वो इस लॉस को झेल पाएँ और भगवान उनको शक्ति दें. And let's get together, celebrate his life. He will live through his teachings, he will live through his philosophy, and he will live through the tabla of his disciples in the future. That's for sure. Very nicely said, Yogesh. Very, very nicely said. You said everything. It's very hard to believe, truly, that we are actually all here because of this reason. But you said we must celebrate him and we must remember him in a very positive way. And we are all very lucky that we actually got to know the person that he was and the kind of music that he played, and we experienced it at such close quarters and for so many times, so many innumerable times. So it's really amazing. I'd like to now call Mridanga Maestro. Unfortunately, now that will be the last concert that I have done along with him. Is going to be the Hyderabad Festival. And that too, I invited him to play the duet with Mridanga Maestro Patri Satish, and what magic they created was stupendous on stage, and it also translated. Really missing the 4 pillars that I ever got opportunity to play. I am missing one pillar. Other three are here in this meeting. Yogesh da, Vijay da, Ramkumar da, Subhankar da. I am really missing him. And what to say about, because we had so many, we had concerts together in form of accompaniment or jugalbandi or solos or fusion concerts. In fact, Rakesh ji, we had some Sacred Drums of India also we toured. And what memories is going on, were going on in the last 2 months when I heard the news that he got hospitalized and he's unwell. And one thing I want to share, we did a recording about Panchabhutas long back. I'm going to talk to their family, wish to bring that out, which we have not released. In fact, Subhankar da wanted to release that after this pandemic. Hope we'll bring that album in dedication to him. And I'm going to talk to their family also in this record. It's about the 5 elements, how beautifully he has conceptualized. And he invited me to his place, and so many, he's a very good, I consider a few, some 5 to 6 legendary tabla musicians as very good mridangam artists. Because for all of them, the level of understanding of the Indian rhythm, I don't discrete between Hindustani style or Carnatic style. The way they all have understood the layam, including Subhankar da, was phenomenal. And I have learned a lot personally. It's a great learning experience to be associated very closely with Subhankar da. And I am one of the most fortunate mridangam artists from South to be associated with him through all my friends, fellow musicians. But it is really a shocking news and very, very unbelievable, like everyone said. May God, we never, whenever I think of Subhankar da, he is very well built, as every one of you know.
and very, very joyful person, never harsh to any musicians, even in any form of music. Even because Sacred Drums tour, I mean, there were so many ups and downs till we reach Europe. So, but still he maintained that composed state, and how he brought all of us. And it was, I mean, it's personally a great loss losing a brother. That much I can tell. Namaste. अनम्यूट कर दीजिए दुर्गा जी। दुर्गा जी। हाँ जी, I said it's a personal loss for all of us, and we are here to just express our love for him. And I have, I just don't know how we are all going to overcome this, because all of us will miss him in our own ways. Because, like you said, Satish ji, the fact is that he was truly a very sweet person and equally good tabla player. The combination is the rarest of the rare. And don't know how to, how we'll overcome all this, but God has his ways to show us the way. And now I'd like to call upon the maestro of tabla, and somebody who's been such a wonderful artist and an equally wonderful person, Pandit Vijay Ghate ji. Unmute. विजय जी अनम्यूट कर दीजिए। ओके, हाँ जी, नमस्कार। एक्चुअली पंडित विश्वमोहन जी ने इतना सही कहा कि इस वजह से हम लोग मिलेंगे, ऐसा कभी सोचा नहीं था और कभी ऐसी सोच हो भी नहीं सकती। लेकिन ये बहुत ही दुखद समय है और बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है शुभंकर भाई का तो मालूम पड़ा मुझे एक जब वो एडमिट हुए और फिर मेरी योगेश भाई से बात हुई, और लेकिन वो बहुत ही शॉकिंग था। वो सब वो पीरियड ही पूरा शुरू का जब मालूम पड़ा और सब बहुत शॉकिंग था। और मैं हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि ये शुभंकर दादा के साथ ऐसा तो नहीं हो सकता था। अभी जैसे मुझे मैं सोचता था कि बापूजी लास्ट ईयर से नहीं रहे, फिर राजन भैया और अभी शुभंकर दादा, तो ये लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका रहना इसलिए भी जरूरी होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कुछ भी अटेम्प्ट करे तो वो पहले सोचे कि ये लोग सुनेंगे, तो उसके लिए एक कम से कम इतना हमको आना चाहिए, या कम से कम इतना हो तो ही हम ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों का रहना हमारे म्यूजिक के लिए, जैसे श्रीनी की भी बात की, मेंडोलिन श्रीनिवास जी की, तो ऐसे कुछ लोगों का रहना हम लोगों के लिए बहुत, म्यूजिक के लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए ये म्यूजिक का मेरे हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा लॉस है, और इसको हमको भुगतना पड़ेगा, इस लॉस को, जो हम लोग जब तक हैं तब तक इस लॉस को हम भुगतेंगे। और मेरा उनका शुभंकर भाई का एक्चुअली जो जिसको परिचय बोलते हैं, जो वो बहुत ही पुराना है। भोपाल में मैं शाहिद भाई के साथ, उस्ताद शाहिद परवेज जी के साथ गया था, और शुभंकर आए थे, रोनू मुजुमदार और तरुण दादा का डुएट था। ये बात है मेरे ख्याल से 87 या 86 या ऐसी कोई। उसके बाद क्योंकि हम लोग एक साथ बजाने वाले थे तो बहुत ज्यादा ऐसा मिलना जुलना बहुत ज्यादा नहीं था, और मेरी कभी हिम्मत भी नहीं हुई उनके साथ डुएट बजाने की। लेकिन एक बॉन्डिंग जरूर हमेशा रहा है, जैसा मेरा योगेश भाई के साथ भी एक जरूर एक बॉन्डिंग है, रामकुमार भाई आपके साथ भी है, और लेकिन एक बॉन्डिंग रहा है क्योंकि हम लोग तेजेंद्र के साथ अटलांटा में, शायद तेजेंद्र दादा सही कहेंगे, अटलांटा में हम लोग 2001
जी, वहां पे भी हम लोगों ने क्या अच्छा समय, इतना म्यूजिकल समय, और उनका वो गा के वो भूप की एक वो मिमिक्री करते थे, एक वो भूप राग का वो पंचम के बाद Yes. आवाज फट जाती है, और तो वो सब बहुत अच्छा। फिर हम लोग एक यहाँ पे एक पूना में छोटा मोटा सब परकशन वाले मिलके ताल चक्र का एक आयोजन छोटा होता है, उसमें भी शुभंकर भाई 2 बार आए, और ऐसा जबरदस्त बजाना, बहुत जबरदस्त। और मेरे पास वो सब है, मैं परसों ही सब सुन भी रहा था। और बस मुझे एक बात जरूर कहनी है, पता नहीं ये समय जगह या सब ठीक है कि नहीं, लेकिन मेरी जो बात हुई थी योगेश भाई के साथ, एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन के लिए मतलब क्या कहते हैं, फाइनेंशियली बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता है। और इस तरह की ट्रीटमेंट और इस तरह का इतना समय हॉस्पिटल और ये सब, मतलब भगवान ने उनको बहुत दिया, और मतलब उससे ज्यादा भी उनको सब कुछ, मतलब ये मुझे कहना है कि कुछ हम लोगों ने ये भी सोचना चाहिए, दुर्गा जी ने हम सबको बुलाया है, कि वो फैमिली का कैसे हम लोग, अभी जो इतना डेफिनेटली जबरदस्त बिल हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, तो उसका क्या अरेंजमेंट है, वाकई है सब ठीक है, गवर्नमेंट कुछ हेल्प कर रही है। मैंने योगेश भाई को कहा था कि कुछ लोगों को हमने भी कहा है अपनी कैपेसिटी में, उस टाइम पे तो किया था जो भी है, कुछ लोगों ने को रिक्वेस्ट करके, लेकिन इस तरह का कुछ गवर्नमेंट के थ्रू, या तेजिन दादा आप कुछ बताए कैलकाटा में कि सब ठीक है, इतना ही कह दे तो भी सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो एक चिंता हम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और पर्टिनेंट पॉइंट है, दो आई थिंक दिस इज नॉट द राइट फोरम फॉर डिस्कसिंग जी दिस, जी, दिस इसीलिए इज, मैंने पहले ही कहा कि सॉरी अगर, लेकिन ये दुर्गा जी, दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर द म्यूजिशियंस। आप देखिए, यू वोंट बिलीव, ये शुभंकर का जो ट्रीटमेंट in ECMO with ventilation per day, the bill was like 1.5 to 2 lakhs. oh. So you can imagine the total costing, how much it could be. But भगवान ने बहुत सहायता दी। Subhankar is so much loved by all people, all the musicians, all his friends. हमारे तरफ से हमारे जितने सारे स्पॉन्सर्स, गेस्ट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिसके पास होता है, they have all the musicians, मतलब सब लोग, योगेश भाई, पुरबायन, कौशिकी, सब लोग, और हमारे विजय भाई, रशीद भाई, तन्मय, विक्रम, अजय दा, all the musicians, even Zakir bhai, in fact, he was so much in pain today when I got his message. He was just, I just woke up, I couldn't sleep last night. It happened to a lot of musicians. तो रात 3:30-5 बजे वहां का टाइम, उस टाइम पे आई रिसीव द मैसेज, एब्सोल्युटली डिवास्टेटेड, ही जस्ट रोट मी बैक। तो सारे के सारे म्यूजिशियंस और सब लोग, बट गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट हैज डेफिनेटली हेल्प्ड, in its own way, but we didn't get any help from central government. तो ये मतलब हो गया किसी तरह से, हमने we have been able to manage. लेकिन देखिए, it might happen to any musician. किसका इंश्योरेंस एग्जैक्टली किसका इंश्योरेंस 1 करोड़ का रहता है, आप नहीं बताइए नहीं, किसको? सवाल ही नहीं, और पॉसिबल भी नहीं है भाई, हाँ, पॉसिबल भी नहीं है। तो यही बात है कि मतलब probably the time will come when the musicians will be in the center of attraction from the government, कि उनको सारे के सारे कम्युनिटी, सारे के सारे फ्रेटर्निटी, उसका भी कुछ हो रहा है। म्यूजिशियंस तो एसेंशियल जो चीज है, उसमें तो म्यूजिक नहीं पढ़ते हैं ना। एंड स्पेशली आई थिंक, बिल्कुल स्पेशली आप देखिए, अभी यहाँ पे पंडित जी है, बिशु भाई है,
ये हमारे आपका जनरेशन का सीनियर म्यूजिशियंस जो है, आपकी तरफ से क्या हो सकता है? विल बी ऑलवेज टू हेल्प टू बी एसोसिएटेड विद दिस सम फोरम, जो हमारे म्यूजिक के लिए क्लासिकल म्यूजिशियंस और मतलब म्यूजिशियंस इतने सारे, यू नो, लास्ट ऑलमोस्ट 2 years क्लासिकल म्यूजिशियंस हर शहर में क्या क्या हालत है। तो ये तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन। मतलब आई विश, माय प्रेयर टू गॉड दैट ये कभी किसी को नहीं हुए, लेकिन अगर किसी का हो जाए तो इट विल बी रियली रियली डिफिकल्ट। इवन आई एम टेलिंग यू, इफ आई सफर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिजीज, I won't be able to ask anybody because इतना पैसा किसी के पास नहीं है। We have been very fortunate to have the people like जो शुभंकर भाई के लिए, शुभंकर is so lovable and उनका अपना वो जो है उसके लिए सब लोग आगे आए। Every musician, every sponsors from different corners, वो उनके बारे में तो they have come forward। लेकिन कितने दफे हम सबका ही तो एक एसोसिएशन है ना, जैसे योगेश भाई, विशु भाई, सबका ही जो है उसको आप कितने दफे बोल सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज द हाई टाइम टू थिंक अबाउट दिस, और वी शुड नहीं, और मुझे ये भी मालूम है, मालूम है क्योंकि मैं आर्ट एंड आर्टिस्ट का बहुत पुराना मेंबर हूँ, और मैं तो एक टाइम पे तो क्रू में काम करता था आर्ट एंड आर्टिस्ट के, दुर्गा जी को मालूम है। लेकिन मुझे मालूम है कि आर्ट एंड आर्टिस्ट ऐसा करते हैं और बहुत सालों से कर रहे हैं कलाकारों के लिए, और जो रिटायर्ड कलाकार हैं या जो उतना अभी वो कैपेसिटी में नहीं है, उनके लिए आर्ट एंड आर्टिस्ट बहुत सालों से कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं दुर्गा जी को ये बात थोड़ा रिक्वेस्ट करूं कि कुछ इस बात का ख्याल। लेकिन अच्छी बात है, तेजेंद्र ने कहा कि सब ठीक है, ऊपर वाले की कृपा है, बहुत बहुत ये वी आर रियली फॉर्चुनेट कि ये हो गया। Only for Subhankar, only for Subhankar, we don't let it happen anything। जी, मतलब उनके लिए, उनके फैमिली के लिए जो कुछ भी होगा, everybody will be there, and I believe that everybody of you will be coming forward। बिल्कुल। Thank you विजय भाई for raising such an important point। और आपने तो मतलब जो म्यूजिशियंस है और उनकी जो फ्रजाइल लाइफस्टाइल है, क्योंकि म्यूजिक से परमानंद तक पहुंच सकते हैं, लेकिन खुद की देखभाल करना और खुद के फैमिली की देखभाल करना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है। और शुक्र है ऊपर वाले का कि बहुत सारे लोगों ने शुभांकर दा की बहुत बहुत हेल्प की है, और उसमें पुरबायन और तेजंदा एंड ऑफ कोर्स राकेश, कौशिकी, आपने, राकेश, सबने बहुत हेल्प की है। एंड आई एम श्योर इट इज टाइम फॉर अस टू थिंक we will have another forum, or maybe in privately we can all come together and do something for the fraternity. We deserve to look after each other. We must rather look after each other. I'm sure we will do something। जी बिल्कुल। और इसके पहले कि हम लोग आखिरी, I think विशु भाई wants to say something। विशु भाई, हाँ, पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। वैसे तो दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस दिस इशू, बट मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ बहुत ब्रीफली। जैसा कि तेजेंद्र भाई ने कहा कि खर्चा 1 लाख से 1.25 लाख पर डे उनका आया। अभी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, आई हैड लो सोडियम, और मैं बाथरूम में फेंट हो गया था और गिर गया था। तो मेरे इधर चोट आई थी और मेरा माइल्ड ब्रेन हेमरेज हो गया था। अरे बाप रे। ब्लड क्लॉट इधर सारे हो गए थे मेरे, वो चोट की वजह से। पंडित जी आईसीयू में बहुत टाइम तक थे, और मैं बहुत टाइम तक मैं आईसीयू में रहा, मतलब करीब 1.5 महीने तक मैं वो मतलब मेरा वो चल रहा था। और उसके बाद सर्जरी हुई, किसी तरह से वो ठीक हुआ। लेकिन मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, तो वो हॉस्पिटल पूरा एकदम मतलब जिसको कहते हैं कि आपको लूटने के लिए तैयार। और एक ही एक टेस्ट बार बार, कभी मैं MRI
पता नहीं कितनी बार MRI और 28,000 का MRI और फलाना और ढीका करके, कहने का मतलब ये है कि मेरा, आप सोच सकते हैं कि मेरे जितने भी FDs थे, जितनी बचत थी, सब खत्म हो गई। सब खत्म हो गई। मेरे पास में मतलब ये होगा कि मैं करूंगा क्या मैं भविष्य में। वो तो भगवान की कृपा थी कि जो भी बचा के रखा बुरे वक्त के लिए, लेकिन वो बुरा वक्त आ ही गया सच में ही। और मतलब इसके लिए न कोई किसी सरकार ने मदद की, न किसी ने कुछ किया, और मेरी मतलब पूरा मेरी जेब से जाता रहा। कई बार अफसोस होता है कि ये अवार्ड जो घोषित कर रखे हैं सरकार ने, इस अवार्ड के साथ में कुछ आर्टिस्ट को कुछ पेंशन मिलनी चाहिए, या कुछ बहुत ऐसा सही बात। हेल्थ का बिल्कुल बिल्कुल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होना चाहिए, या कुछ करना चाहिए। ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होगा अगर ये पद्म अवार्ड के साथ, या दूसरा कोई भी अवार्ड हो, तानसेन अवार्ड हो या कुछ भी हो, ये अगर ये दे दें कि ये साहब आपकी हेल्थ की हम टेक केयर करेंगे, भगवान न करे आपको कुछ हो, अगर हो गया तो ये that will be reimbursed by government or whatever. So I also agree with what Tejendra bhai just mentioned, Vijay bhai mentioned, that there should be some provision from every organization, every government or something, and especially the local government should also think of it. Not only central government, but local government should also. This is my मगर approach. वही सॉरी Very- मगर वही छोटी मुंह बड़ी बात, मगर वही हु विल बिल्ड द कैट। विजय भाई से काफी देर बात हो रही, तो हम तो चलो भगवान ना करे, विजय भाई हम लोग बात कर रहे थे, बिना हॉस्पिटल जाए सारे FD चले गए। हाँ तो म्यूजिशियंस के लिए तो ये भी कि अगर 2 साल एंटरटेनमेंट में आता है, एंटरटेनमेंट सबसे लास्ट आता है। अरे एंटरटेनमेंट मतलब सेलिब्रेशन। सही बात। तो अच्छा कोई इंश्योरेंस भी हो जाए कि देखिए, हम लोग पहले ये सोचते थे कि भाई हम तबला बजाते तो हाथ जरूरी है, भाई फ्लूट बजाते तो क्या ओट जरूरी है, पर उसके लिए कान, आंख, दिमाग, सेंसेस सब अच्छा चाहिए। तो एक अच्छा इंश्योरेंस हो जिसका लो EMI हो, कम से कम, एटलीस्ट योर फैमिली कैन सर्वाइव। सही, बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये अभी हु विल बिल्ड द कैट, हु विल मेक अ प्रपोजल, वो बहुत I जरूरी है। think बिकॉज all of us शुभंकर दास से बहुत सीखने मिला है कि सभी शुड, एवरीबॉडी शुड मेक अ प्लान। एक प्लान बी होना ही चाहिए। देखिए, let me tell you, I was not going to use this forum, but actually, I know, but नहीं, sorry. माफ करिए, मैंने ये सब्जेक्ट नहीं, मुझे ऐसा लगा it's कि very pertinent मैं सिर्फ पॉजिटिव बात करना चाहती हूँ यहाँ पे। आई नो ऑल ऑफ अस Okay, आर, nice. आई मीन मैं अपने आप को अलग नहीं समझती, हम लोग सब के सब इस एक भयानक Yeah, तूफान में अटके हुए हैं। I just want to mention one positive thing about Subhankar's, as I was involved right from the day one. The best of the treatment we had been able to provide, at least in Calcutta, और वो जिस हॉस्पिटल में वो हो रहा था उसमें, we have been able to get the advice from the best of the government doctors, senior professors. तो उसी हिसाब से एक तो अफसोस ये नहीं है कि हम we had not been able to provide the best of the treatment. ये at least we have been able to do that. तो पॉजिटिव थिंग ये है कि ये शुभंकर के लिए उनका मतलब डेस्टिनी, हम तो उनको रख नहीं पाया, बट एट द सेम टाइम ये भी तो एक कनेक्शंस की बात है। ये कनेक्शन सब आ गया था। everybody was so much sincere to help, to give the best of the medication from the hospital side, from the administration side. तो ये हुआ. So that is definitely, that could be possible, but at the same time, the hospital also has given us a reasonable amount of discount. लेकिन उनका भी तो एक लेवल है. आप मान लीजिए कि 80 lakhs or 70 lakhs हुआ, we can't expect that the hospital bill will be 35 lakhs. So यही बात है. मतलब one has to be ready with that minimum. Otherwise, government hospitals are in West Bengal now. Government hospitals, very few government hospitals are very much well equipped. लेकिन हम उसी हिसाब से हर टाइम हम नहीं सोच सकते हैं. So that was a positive thing, at least.
that we had been able to provide the best of the treatment, और बाकी कुछ कमी नहीं हुई, यही बस. I just want to add here कि Vijay Bhai said some, even in this moment he remembered that we have in the past done a lot of we've tried to help a lot of musicians with medical aid especially. So right now, because of what we are going through, I just wanted this, I never thought that I would be using this platform to actually share all this with you, but since all of you are raising concern, so it is definitely important that I share that my first draft of the same concern is all ready. मैं आप सबको भेजूंगी, आप अपने अपने inputs दे दीजिए, and collectively we have to do it for the community, we have to do it for our sector, क्योंकि मैं नहीं सोचती कि किसी और की ये जिम्मेदारी है कि कोई बाहर से हमको कोई हेल्प, वो लोग तब हेल्प करेंगे जब हम लोग पहले सब यूनाइटेड फ्रंट पे खड़े होंगे, एंड आई एम श्योर हम लोग जरूर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग का एक कॉमन गोल है टू कैरी ऑन दिस ग्रेट हेरिटेज एंड लेगेसी ऑफ आवर इंडियन म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशनल म्यूजिक टू द नेक्स्ट जनरेशन. वी विल ऑल बी यूनाइटेड and we have to do it with for the common goal of, so that tomorrow nobody is in this situation that anybody needs the best medical aid or the best education to learn music. There should never be any shortage of money ever, and I really want to pray to Bapuji and God कि ये में जो हम सब इकट्ठा एक जब बोल रहे हैं, भगवान हमको इतना सशक्त बनाए कि हम अपने आप में अपनी एक दूसरे से शक्ति ले सकें. ये बस हम लोग खुद ही कर सकते हैं, और हम लोग एक बार खड़े हो जाएंगे, it will become everybody's responsibility to look after this great and rich legacy and heritage of this country. ये तो समझना ही होगा सबको. मैं किसी की और की जिम्मेदारी सोचती नहीं, मैं सोचती हूँ हम लोगों की जिम्मेदारी, हम लोग उसको निभाएंगे, सब लोग अपने आप से हमारा साथ देंगे, और उनका दायित्व होना होगा ही होगा. मैं किसी और को नहीं कहती, सही बात है. आप सबको ड्राफ्ट भेजूंगी, हम सब मिलके करेंगे. मैं किसी को इसमें से बाहर का नहीं समझती. हम जो भी इस 7 सुरों में और इन लय में और ताल में हम एक दूसरे से जुड़े हुए, हमारा खून से भी ज्यादा गहरा रिश्ता ये है. एंड इट इज ट्रूली, इट इज वेरी गुड. And I promise you, I have always tried my level best to do for music and for the community. I'll definitely, I'll commit my life to this. We can never see a day like this ever again. We should not. जी बिल्कुल. सचमुच ये मैंने सोचा ही नहीं था कि इस अवसर पे मैं ये बात करूंगी, लेकिन हम में से कोई ऐसा दिन ना देखे कि हम लोगों को बस हम लोग हो जाएंगे. हमको भरोसा करना चाहिए. और रतन भैया आप प्लीज कुछ कहें, और उसके बाद एक अच्छे से श्लोक से हम वी विल प्रे फॉर शुभांकर दा. प्लीज रतन भैया, रतन मोहन शर्मा जी, आपने भी उनके साथ स्टेज शेयर किया है पंचतत्व में और भी कई जगह पे, तो प्लीज जरूर कुछ कहें. बहुत सबने इतना अच्छा कहा है, और जैसे सबको याद आ रही है, मुझे भी बहुत याद आ रही है. हम लोगों ने कहीं का सब जगह पंचतत्व में तो साथ में थे ही, हर जगह पर थे ही, और आइडिया जलसा खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं, यादें जुड़ी हुई है. बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अच्छी जगह मिले, और जो जिस लेवल पर यहाँ पर थे उससे भी भगवान उनको बड़ी अच्छी लेवल पर उनको रखे, उनको बहुत सब कुछ दे. तो वो मैं एक श्लोक गा रहा हूँ, जिससे जिस प्रकार से सब लोग पंडित बैठे ही हैं, तो भगवत गीता में जो कहा है वासांसी जीर्णानि, वो मैं श्लोक गा के, ताकि उनको अच्छी आगे की और एक अच्छी जिंदगी मिले, अच्छा शरीर मिले. बिल्कुल जरूर आइए. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। ॐ शान्ति शांति। आप में से अगर कोई भी कुछ अगर लास्ट में कहना चाहते हैं तो कहिए। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि शुभांकर दा, रेस्ट इन पीस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, प्लीज कम बैक। दिस वी वांट यू, म्यूजिक नीड्स यू, जस्ट कम बैक क्विकली, प्लीज डोंट टेक टू लॉन्ग, दैट्स ऑल। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आप लोगों में से कोई कहना चाहे तो प्लीज। और मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे आते हैं कि वो अपने आप में अमर हो जाते हैं। हमारे दिल से उनकी याद कभी नहीं जाएगी। उनका चेहरा, उनकी अदायगी, उनका स्टेज अपीयरेंस और उनका तबला, ये हमारे दिल दिमाग में हमेशा रहेगा। हम उनको हमेशा याद करेंगे और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भगवान उनको शांति प्रदान करे। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू। उत्साह परिवार, आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप द ग्रेट तबला माइस्ट्रो पंडित शुभंकर बैनर्जी की आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना जरूर करिए और उनके संगीत पे, उनके सब शिष्यों पे, उनके परिवार पे उतना ही प्रेम बरसाइए जितना आपने शुभंकर दा पे बरसाया है। और यहाँ पर जो मौजूद सारे कलाकार हैं उन सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि आपके प्यारे बोल उन शुभंकर दा तक पहुंचे होंगे और उनकी, आई एम श्योर उनकी आत्मा को बड़ी खुशी हुई होगी, बिकॉज ही मस्ट बी ऑल्सो लाइक राकेश सेड, लाफिंग बुद्धा, स्माइल कर रहे होंगे और बहुत प्यार से हम सबको देख रहे होंगे। आप जहां पर भी हैं शुभंकर दा, बी हैप्पी, ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड बी इन रिदमिक पीस। Thank you. जय हो। नमस्कार, थैंक यू। जय हो।